Let me introduce two very important persons today. Mr. Kanojia is from the BIS and Parul, right? Yes. Parul is also from BIS. They played a very important role in formulation of what we are going to present. So all the tough questions will be transmitted to them. The easy ones we can take, right? Yes. Okay. So we have a small presentation on कि ये क्या चीज़ है और हम क्या करने जा रहे हैं और उसका क्या महत्व है और उसको कैसे हम करने की इच्छा रखते हैं. What is the proposal? So if you see that big number, that IS 19,000 2022. So that is a standard that BIS has formulated for us in consultation with us and the industry, and public consultations have taken place. So now this is ready to be launched. And while we unveil the main provisions of this standard today, this will be published and up and running on Friday, right? Yes. Yes, sir. Friday is 25th. So on 25th, this will be in place. So they come into effect from They come into effect from 25th when the publication takes place. Yes. Next. तो ये सबको पता है कि ऑनलाइन रिव्यूज का क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. ई कॉमर्स में बहुत सारी शॉपिंग में रिव्यूज प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, सो दैट इज व्हाई दे आर मोर इम्पोर्टेंट. एंड इफ यू सी द लास्ट 3 bullets at the bottom, they are further more important in tour and travel, restaurant, eateries and consumer durables. So tour and travel में ये होटल 5 star rated है, ये होटल 7 star rated है, not the hotel rating, I mean in terms of services, whatever. So sometimes when we are making a booking, we are tempted to be driven by those rankings, which are an aggregation of the reviews for that website. So then it becomes very important that they are more authentic and people can really trust them. Next. तो आप लोग में से बहुत लोग शायद हमारे साथ थे उस दिन जब 10 जून को हमने ये कहा था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, बिकॉज वी वर गेटिंग कंप्लेंट्स कि ये रिव्यूज इज बिकमिंग अ मेनेस. और हमारे लिए ही नहीं, आई हैव डेटा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट ऑल द बिग कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग with how to handle fake reviews. I have this document from last month from the US body called FTC, and they are saying we will explore rule making. I have this document from all over the world. UK क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, जर्मनी क्या कर रहा है, US of course you got China, India also. So they mentioned about your standards. Australia क्या कर रहा है. So I'm just showing this because all the countries where e-commerce is getting more and more prevalent and popular, so they are all struggling with this. Some are making rules, some are making a legal provision, but I think we are the first country, and I qualify that statement subject to my knowledge, which is making a standard. And we will take the standards route. We don't want to bulldoze the industry. We want to take the standards route. We will first seek voluntary compliance, and then if the menace continues to grow, we will maybe make it mandatory in future depending on what happens. तो ये कमेटी और BIS का जो प्रोसेस है, इन्होंने सारा कंसल्टेशन करके आज हम यहाँ पहुँचे. नेक्स्ट. अब ये किस पे एप्लीकेबल होगा? दिस इज एप्लीकेबल टू जो भी संस्था, जो भी ट्रेडिंग बॉडी, जो भी सप्लायर, जो भी वेबसाइट रिव्यूज को ऑनलाइन पब्लिश करती है, उन सब पर पब्लिश होगा. कई एजेंसीज थर्ड पार्टी रिव्यूज करती हैं, किसी और के लिए रिव्यूज करती हैं, तो उन सब पे भी ये होगा. और इफ यू सी द सेकेंड बुलेट, उसका जो प्रोसेस है, कलेक्शन, मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन. सो द स्टैंडर्ड्स कवर these 3 aspects, and I'll say again, this document is applicable to everyone who publishes reviews online. Next.
So the scope is already covered in what I said, but in case people who love definitions, this is the scope. कि इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होगी एक फेक रिव्यू मैनेज करने के सिस्टम की, और क्या प्रिंसिपल्स उसमें होंगे, ये सारी चीज़ BIS के इस जो नया स्टैंडर्ड 19,000 IAS 19,000 है उसमें कवर्ड है. नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं. दीज आर वेरी नॉर्मल एवरीडे यूसेज इंग्लिश. व्हाट इज अ कंज्यूमर रिव्यू, व्हाट इज कंज्यूमर ने जो लिखा, कंज्यूमर की एक्सपीरियंस डेट मतलब जिस दिन उसने खाना खाया या होटल में रहा या सर्विस करी. रिव्यू ऑथर कंज्यूमर कौन है, अनसॉलिसिटेड रिव्यू और सॉलिसिटेड रिव्यू, ये मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. वन इज यू आर गोइंग ऑन योर ओन एंड मेकिंग अ रिव्यू कि आई टुडे बॉट दिस इज वेरी नाइस, बट समटाइम्स people who have shopped at Marks and Spencer will know that sometimes they ask you, they'll send you a SMS or a mail, would you like to fill a review, they'll give you 500 rupees for that. So those we are calling solicited reviews. और जो उस व्यवस्था के अंदर व्यक्ति हैंडल करता है, that is the last row, that is called the review administrator. It's like the person responsible within that website or within that institution who is responsible for these reviews. Next. अब ये सबसे महत्वपूर्ण आगे की 6-7 स्लाइड्स हैं कि ये जो व्यवस्था BIS और हमने मिलकर बनाई है, इसकी क्या प्रिंसिपल्स क्या है. पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, कि मतलब जो इट्स वेरी लॉजिकल बट समटाइम्स इट इज गुड टू री एम्फसाइज ऑन इट, कि जो रिव्यूज हैं वो लेजिटिमेट होनी चाहिए. द सेकेंड प्रिंसिपल इज नेक्स्ट एक्यूरेसी, कि जो कलेक्शन का प्रोसेस है मॉडरेशन और पब्लिशिंग का, वो एक्यूरेट होना चाहिए. जो जिसने जो लिखा है वही वहाँ पे प्रदर्शित होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग. नेक्स्ट, थर्ड इज प्राइवेसी. जो रिव्यू कर रहा है उसकी परमिशन के बिना आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज if you're writing a bad review, that company might not take it very kindly and they might hit back at you, or so this is to protect that person. This is like a little, I'm drawing a bad parallel, like a whistleblower thing. If somebody is raking up the issue कि बहुत खराब है यहाँ पे सर्विस, so he or she should not be targeted. Next, security, कि जो सिस्टम्स हैं उसमें कोई ब्रीच ना कर सके, वो सारी वेबसाइट्स पे उपलब्ध होती है ये, बट इसके लिए ये स्पेशली इज मोर रेलेवेंट. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ बियरिंग ऑन हाउ वी हैंडल फेक रिव्यूज. जो रेटिंग्स आ रही हैं उसको आप ट्रांसपेरेंटली, पता लगा फर्स्ट पेज पे आपने सारी 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार कर दी, और जो 1 स्टार थी वो संख्या में ज़्यादा भी थी तो उसको पीछे कर दिया. सो दैट इज not acceptable. You have to be transparent in what you are displaying. You have to be transparent about methodology. क्योंकि जो 5 या 4.7 स्टार आ रहे हैं वो आपने कैसे निकाले, क्या सबका जोड़ के एवरेज कर दिया, या पिछले 30 दिनों का किया, या पिछले 1 साल का किया, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि केवल आज का कर दिया. जब आप स्टार्स देखते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि ये एवरेज कैसे आया है, ये क्या पिछले साल का है, या जब से वेबसाइट शुरू हुई, या जब से ये प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ तब से है, या कल का है. सो द कंपनीज कैन प्ले टू देयर एडवांटेज. सो वी आर सेइंग यू हैव टू टेल. सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल हियर इज डिस्क्लोजर. You have to tell in a transparent way as to how the aggregation is being arrived at. Next. Then accessibility. जो परचेज करने जा रहा है उसको दिखना चाहिए. It should be available to him in a very easy to use way. The navigability should be. That's for any good website that is applicable. Next. And responsiveness. अगर कोई गलत है, कोई उसको करेक्ट करना चाह रहा है तो तुरंत रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर उसको ठीक कर दे. And they respond to communication both ways, from the sellers and also from the buyers. So these are the principles on the basis of which this standard, which is IS 19,000, has been developed. इसमें जो organization है उसकी responsibility, culture is a very macro word, कि उस संस्था में ये culture होना चाहिए कि भाई reviews are serious and they are something, they should be having integrity, transparency and all the principles that we alluded to in the previous slide.
Organization should have a code of practice, how this is being arrived at, and these are the terms and conditions for the organization to follow in terms of content should be intelligible to readers, content should not have personal information. इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं. Next. And of course, this is a new thing. I was checking what is happening across the world, which I mentioned also to you. This is not something which is very well established across the world. So we are probably one of the first countries to come out with a standard, and so we have kept a very, very open system that it needs to evolve, it needs to continually improve, and for that communication channels have to be clear and effective. Next. अब रिव्यू का जो कलेक्शन प्रोसेस है, बिफोर इट गोज टू द वेबसाइट एंड पब्लिश्ड, एक प्री सबमिशन प्रोसेस है विच इज द फर्स्ट सेमी सर्कल, देन द सबमिशन एंड पोस्ट सबमिशन. व्हाट इज हैपनिंग? सो प्री सबमिशन में जो आदमी लिख रहा है उसको पता होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन, उसका कलेक्शन अनबायस होना चाहिए. देन सबमिशन में जो रिव्यू ऑथर है उसके बारे में वेबसाइट पे सूचना उपलब्ध होनी चाहिए. देन दे सबमिट द कंटेंट. देन रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो हैज अ रोल as to how to publish that content with integrities. And the last bullet is very important. जो पैसा लेके आप रिव्यू लिखवा रहे हैं या ऐसा रिव्यू जिसके लिए आप उसको अवार्ड दे रहे हैं, वो क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए. उदाहरण के तौर पे जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं, पहले जो 2-3 रिजल्ट आते हैं उसके पीछे AD लिखा होता है. दैट इज अ डिस्क्लोजर फ्रॉम गूगल कि दिस इज एन एडवर्टीजमेंट, दिस इज नॉट माई नॉर्मल डिस्प्ले. So we are saying that if a review is purchased or you are rewarding the person for writing the review, that has to be clearly marked that this is a purchased review. Next. Then इनका responsibility matrix है कि review author की क्या responsibility है, review administrator की क्या responsibility है और consumer के review के features क्या हैं. So these have to be conformed to. So if you realize what we have done is this is not a judicial order. We have developed a framework and we want all e-commerce entities to adopt this framework as soon as possible and adhere to the standards. So if they want to check whether their website is adhering to the standards, they can go to BIS and get it checked and get it certified. But if they are not doing it, and if it is indulging into a practice which can then be termed as an unfair trading practice, then under the provisions of the Consumer Protection Act that deal with unfair trading practice, CCPA or a consumer court can take penal action. So this is some sort of a hand holding and self regulation. I mean in Hindi ki bhai ठीक कर लो, अदरवाइज बाद में दिक्कत होगी. Penal action सिर्फ CCPA ले पाए. Penal action CCPA भी ले सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई भी कंज्यूमर कमीशन भी ले सकता है, क्योंकि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का अधिकार दोनों के पास है. CCPA जनरली एज अ क्लास लेता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज एन इंडिविजुअल कंप्लेंट लेता है. तो अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट अनफेयर रिव्यू में इंडल्ज कर रही है तो आई थिंक इट्स अ क्लास बिकॉज उस वेबसाइट से बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं. सो इट क्लियरली कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ माय नेबर हियर हु इज नोन फॉर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन. ओके नेक्स्ट. सो जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, द कलेक्शन प्रोसेस सॉलिसिटेड जब आप मांग रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग यू कैन नॉट सॉलिसिट रिव्यूज, ऑब्वियसली यू शुड, बट देन इट शुड बी क्लियरली मार्क्ड दैट दीज आर सॉलिसिटेड. कब आपने इनवाइट किया था, डेट क्या है, किससे किया, कंज्यूमर डेटाबेस, एंड ऑफ इट क्या आपने अपने कंज्यूमर डेटाबेस से मेल लिखी, या वो जब अपना रसीद कटवा रहा था तब उसने आपको उसमें लिख दिया कि प्लीज सेंड अस अ रिव्यू. एंड अनसॉलिसिटेड इज पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जो नॉर्मल हमारे आपकी तरह के लोग रिव्यू कर रहे हैं, उनको फिर अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी. नेक्स्ट. रिव्यू ऑथर का जिस तरह से नॉर्मल वेरिफिकेशन सिस्टम होते हैं, इन वन और मोर ऑफ दीज वेज द रिव्यू ऑथर की उनको पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा गेम यहीं पे होता है. बिकॉज इफ द ऑथर इज नॉट वेरीफाइड, देयर आर वेबसाइट्स इन जियोग्राफीज लाइक टर्की, मोल्डोवा,
जहाँ पे ये बिजनेस है फेक रिव्यूज का, so these companies pay money and get reviews there. So if this is happening, then that cannot take place. तो इससे कुछ कंपनीज को शायद नुकसान भी होगा, बट कंज्यूमर्स का फायदा होगा. नेक्स्ट. Then all what I am saying is interlinked. So what we are achieving is minimizing biased and fraudulent reviews. So the purchase has to be, as I said again and again, purchase has to be very clearly demarcated. Rewards against, which is different from purchase, and reliability of the collection process, that has to be there. So there has to be filtering, there has to be algorithms, and there has to be a verification and control process. So this is just like a manufacturing entity. Before BSI puts an ISI mark, जैसे कि इस तरह की assembly line होनी चाहिए, product की ये quality होनी चाहिए. So this is very a similar arrangement, but for this domain. Next. Then whatever is review language, that may not be published as it is, because the use of bad words, unparliamentary language, unacceptable words. So the moderator, you can have an automated software. Now you've got softwares which can moderate the language and see that submission as per terms and conditions. I'll give you an example. I go to a restaurant and order a nimbu pani, but I am writing the review of butter chicken without having consumed it. That is unfair. So all that can be checked here, because it can check from what you consume, and you can only write the review of what you actually consume. Things like that. So the moderation can be automated, the moderation can be manual, so that no bias. So maybe the companies would need to deploy some stuff, which they already do. So mind you, when we do this, the companies are also benefited, because companies suffer from the fake review process in an adverse manner, because their competitors use adverse reviews to belittle those companies. Like between Apple and Samsung, if there are two competitors, they will use bad reviews against the competitor to malign the product of the competitor. So if the process is robust and objective and transparent, then everybody gets a level playing field, a fair play, so that whatever you're seeing is objective to the extent possible. Next. So this is the process. So you've seen, first you do an analysis कि जो आदमी लिख रहा है वो real person ही है, इसका पुराना behavior, because you have that record. Then you examine the language. Then after that analysis की problematic content तो नहीं है, गाली वाली तो नहीं दे रहे हैं, fraudulent content तो नहीं है. Then you can use a technology based system or a manual system to moderate, and you can the company can set their own time limit, that within the submission 24 hours we'll go through this process and the review will be published. Next. So in the moderation process, you can reject a review if you think it is fraudulent. उसने जो consume नहीं किया उसकी review कर रहा है, it does not meet your terms and standards. You can reject, you can remove, you can edit, and you have to keep assessing the moderation process by sampling and test reviews. It's like any other system of similar kind. Next. And then the publishing. So content is approved, then date is very important, because as I said, when a consumer is looking at that number, he doesn't know कि ये कब से कब का average है, ये कल का है कि 2 साल पुराना है. So the dates and the use of date in aggregation is important, and the personal information that is being published, maybe a nickname, maybe should be published timely. And then after publication, the authors are also allowed to remove reviews, because he is submitting reviews and he has a right to withdraw it. Next. Then accuracy of the review, then default display कि जो दिख रहा है, if it's a part, if you see the second bullet on the first column, sometimes you see only one sentence and then there is 3 dots. So there might be something bad in the remaining part, but there only the first good part is being put. So it is a responsibility that the full review has to be accessed by the consumer
हिंदी और अंग्रेजी में भी खेल हो जाता है, जैसा कि what was that movie Lost in Translation, what the guy was wanting to say and what is published as a translation. So we are saying translation has to be linked to the original one if somebody wants to see what is original, and then things like that कि date of submission, filtering method कौन सा है. And the third bullet in the beach wala column is very important. Overall rating, which is the most important thing in determining the buying behavior of a person. I personally have bought things just by looking at reviews. Since you don't know the manufacturer and you think everybody is the same, you're not interested in the brand, you see, oh, 4.7 buy. So then the third bullet in the second column is very important as to how that averaging and aggregation is being done. And then profile information. Next. So again, coming to that point, elaborating that point, overall rating, the principles of mathematical objectivity, सारा ऐड करके average निकालना है. Method of calculation should be updated. The mechanism has to be flagged, and overall rating with overall inputs, and the time and conditions and procedures. Next. The criteria for removal has to be known, has to be part of the framework, time limits, and if you see the third column, then if you're submitting something bad and it is not acceptable, then the right is with the review administrator. Next. The second column is first, of course, is important that fraudulent reviews have to be removed. Second is very important that sometimes there are sites which only do review. We had that, what is the name of the person? Huh? Mishri.com. So we had a visitor about 3 weeks back, a lady from Gurgaon. Yes, Gurgaon. So what she does is, it's called Mishri.com. Yes. And they have a group of housewives and they review the kitchen appliances. So the website just does the reviews. So the second column refers to those kind of people where if you are just publishing a review from the review site like Mishri.com, then that also has to comply to the requirements of this terms and conditions. Otherwise, the whole process will get vitiated. Next. Thank you very much. So, in net, this is a framework which has been very meticulously developed by BIS, Mr. Kanodia and Parul and the team. And this is after 30 days of mandatory public consultation. This is now final. And this will become operational from 25th of November 2022. So Parul and Kanodia ji, if you want to add something, you are welcome. I think this standard is prepared by a Central Committee on Business Services under Services Sector Division Council of BIS. And a lot of consultation took place before we finalized this document. In addition to that, this document was also placed for public reviews for about 1 month. And we received a number of comments which were discussed by the experts in the panel. And after all, we are able to finalize the document. Now the process of publication is started, which will take about a week's time. We are expecting that by Friday, coming Friday on 25th November, we will be able to publish this standard with the edit notification. So again, subject to correction, subject to my knowledge, we'll be one of the first countries in the world to have a standard for managing fake reviews on an e-commerce website, which will get rolled out. Parul, you want to add something? Parul has done all the hard work. So. Yes. I think this will be a ready reference even for the small players, where most of them are struggling how to go about it, even if they want to manage it well. So yes, this document will come handy even for the big players as well as the small players, how to handle the review system. So this is for the benefit of the industry as well, not to waste time and struggle how to go about it. It's like a ready-made document for them.
Correct. Yes, so now we are in Abhishek's hands. Yeah, start. So these are only for e-commerce website or for social media platforms as well? Because a So lot if of you- selling happens if you go- through social media platforms as If well. you go to the And not first, just to the. go to the first slide, second slide, after the heading slide. Included all the medium. Whoever is publishing reviews is applicable to them. और सर ये पूरी तरह से वॉलंटरी है और अगर कोई इसको अप्लाई नहीं करता है तो कोई आप एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते? Yes, sir. Very good question. I was actually expecting that question. I was expecting that to be the first question. So, very good point. So, like I said, so we are now hand-holding the industry because this is happening for the first time. तो अभी कल से इसको लगा दें और उसके बाद हम लोग फाइन वाइन लगाने लग जाए तो it's not reasonable. So we will say कि this is the standard. Now please start adhering, conforming to that standard. They are also developing a framework how to measure the conformity to these standards, because before we accuse somebody of not following the standards, we should have that parikshak, that assessor certification system. So we'll give them some time, and after that, but if you catch a case which is blatantly fake reviews, which falls into the category of unfair trading practices, then our consumer commissions and CCPA are even now can take action. But this is to get everybody on board. This is more inclusive, like the ISI standard that they have. कि भाई अपना ठीक कर लो, before we start taking action. Yes, sir. तो सर ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होगा? नहीं सर, अभी नहीं मैंडेटरी है. But when we intend to make it mandatory, that's very important. Because So that time one by one. for products, one needs to take ISI certificate and it is mandatory. So Not once for- you नहीं, have Not for all standards- products. हाँ, So the products which are necessary for safety yeah. of life and other things. So the way the BIS process works is there is a standard, and then if you want to make the standards compulsory, then there is a QCO, quality control order, that is issued by the respective industry. For example, steel. Steel में stainless steel क्या है? SS10, I don't know what's the number. So उसमें निकल 0.04% होगा कि 0.07% होगा. ये बना देते हैं कि this is that standard. Now जो घर में आयरन बार या सरिया जिसको बोलते हैं वो यूज हो रही कंस्ट्रक्शन में, whether that should mandatorily conform to this standard, वो मिनिस्ट्री उसका QCO, the housing ministry or steel ministry, they will issue the QCO. So that is how the process is. Sir, So उसमें शुरू में थोड़ा वक्त दिया जाता है कि आप इसको देख लीजिए, and then if it is becomes very important for the consumer or for the quality or for safety, then we make it mandatory. Yes, sir. सर जैसे ई कॉमर्स साइट पर ये रिव्यू फेक रिव्यू की बात है, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनका कि टेलीविजन पर भी ऐड चलता है, लाइक नापतौल है, तो उसमें अगर वो कोई मेडिकल प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस समय में भी रिव्यू वो देते हैं, वो बहुत सारे पेशेंट से वो रिव्यू कराते हैं कि हम बहुत फायदा हुआ, उन पर ये कैसे लागू? बिल्कुल उन पर भी एप्लीकेबल, उन पर भी ये लागू होगा? Anybody who is indulging in a review यदि वो and एक्टर publishing. है तो वो ये बताएं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, राइट? लेकिन Endorsement कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर वो एक कंज्यूमर के रूप में कह रहे हैं तो उन्हें ये तभी उनकी बात मानी जा सकती है जब वो खुद उन्होंने यूज किया. सर इसके लिए कोई निगरानी तंत्र हम विकसित करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, Yes. जिससे कि पता लगता है कि व्हाट इज क्योंकि फ्रेमवर्क जो है वो स्व अनुशासन है. जी, तो शुरुआत स्व अनुशासन से ही होती है, और उसके बाद जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, BIS इसकी कंफर्मिटी का एक ढांचा तैयार कर रहा है, जो कि BIS प्रॉमिस की 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम इनकी कंफर्मिटी को मेजर करना शुरू करेंगे, और जहां हमको ज़्यादा दिक्कत दिख रही है वहां फिर इनको रेफर करेंगे या कंज्यूमर कमीशन को रेफर करके एक्शन करेंगे. तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, वी विल स्टार्ट विद लाइक एवरीथिंग एल्स, वी स्टार्ट विद सेल्फ रेगुलेशन एंड ग्रेजुअली मूव टू कंप्लायंस. This is not to unsettle the industry unnecessarily, and this is within the overall framework of the government of ease of doing business. कि हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे, but consumer is also important. So please. एज ए कंज्यूमर अगर मैं
एक रिव्यू कर रहा हूँ और मैं काफी नेगेटिव रिव्यू दे रहा हूँ और वेबसाइट उसको पब्लिश नहीं कर रही है, हाँ. तो व्हाट एक्शन आई कैन टेक वेयर आई कैन कंप्लेन? आई कैन कंप्लेन Yes, to the ministry, CCPA, or to a court, or to National Consumer Helpline. Yes, because by refusing your supposedly genuine review, they are indulging in unfair trading practice. You should actually. So what led you to look at this in the form of a standard rather than guidelines or other, like, what are certain challenges in bringing it in the legal framework? I think standards, very good question again. Good question number 2. So, रिव्यू कर रहे हैं सर? और क्या? आपने पूछा नहीं आपका नंबर 1 तो that will be biased to you. सीसीपी में कंप्लेंट। तो मैम बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका कि एक तो कानून बना के कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने में जैसे आपने देखा वो जो फ्रेज है ना अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। जैसे अगर हमने कहा कि नहीं ये अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस है, वो कंपनी आके लड़ाई कर रही है कि साहब नहीं ये तो फेयर है, हम ऐसे ही करते हैं। सो उसको अगर एक हम परिभाषा में बांध दें, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचे में कि साहब ये फेयर होगा, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका जो रिव्यू हैंडलिंग मैकेनिज्म है उसको हम फेयर मानेंगे, ये तरीका है। सो वी थॉट दिस इज अ बेटर वे। जैसे इसमें मैं पढ़ रहा था कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, FTC ने एक बनाया फिर उनको वापस लेना पड़ा। FTC इज USA, सो दे सेड दे टुक एक्शन, $1 million किसी पे फाइन कर दिया, देन दे वेंट टू कोर्ट एंड दे लॉस्ट बिकॉज दे सेड दे डिडंट हैव अ फ्रेमवर्क। वैसे ही EU के भी इसमें एग्जांपल्स हैं। आई थिंक नॉट फ्रांस हैज अ गुड सिस्टम, UK हैज अ सिस्टम, इनकी कंज्यूमर अथॉरिटी को कहते हैं CMA, कॉम्पिटिशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी। उन्होंने कुछ रूल बना के अप्लाई कर दिया, बट ये वाली चीज़ नहीं करी जो हम आज कर रहे हैं। सो दे हैड टू गो बैक एंड नाउ दे आर डूइंग द कंसल्टेशन अगेन। So we are wiser by the experience from the world, and that is why we took this path. It is more robust, more reasonable, and it is not confrontational with the industry. Because ये industry को भी promote करना है ना, e-commerce we have to promote, in addition to protecting our consumers. Even Sorry. it also defines the responsibility of the consumer. How to write. Yes sir. एक सिंपल चीज समझना चाहता हूँ, ये रिव्यू फेक है, ये कौन तैयार करेगा? ये तो सारा वो तो सिस्टम में है, लेकिन वो फेक है ये तय कौन करेगा? कौन करेगा? तो 3 चीज जैसे आपने देखा होगा, एक तो जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर है